Hello and Assalamu alaikum. Thank you for joining us for another Mukaalma series session. Today we have Asif Raza as our guest speaker, and we're very excited and looking forward to this interview. Um, Asif Raza, have been in the business of photography for the past 30 odd years. And after having established myself as the leading photographer in Pakistan over a year, I've moved to Canada, which is home for the past 18 years. My greatest talent is patience, problem solving, and keeping things simple, ensuring comfort for my clients. And as a result, I've had the privilege of photographing senior executives, flying with the Air Force in their fighter jets, photographing planes in flight or industrial plants, or for that matter, nearly falling off to my death from an open door of a helicopter, as well as the beautiful models and fashion over the years. Thank you so much for doing this. Thank you for taking out time. Welcome, welcome, welcome. मेरे पास कोई बहुत ज़्यादा सवाल नहीं है। मेरे पास कुछ बेसिक ऐसे सवाल हैं जिससे मैं कन्वर्सेशन शुरू करना चाहती हूँ कि आप अपने बारे में थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड बताएं ताकि लोगों को ये समझ आ सके कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपने फोटोग्राफी कैसे डिस्कवर की, फोटोग्राफी का शौक कैसे डेवलप हुआ और फिर कैसे सोचा कि करियर बनेगा फोटोग्राफी, और उस वक्त में फोटोग्राफी के क्या हालात थे, उस वक्त आपके आगे पीछे फोटोग्राफी कैसे देखी जा रही थी। ओए ओ बॉय, ये तो आप मुझे वो तारीख में, पुरानी तारीख में लेके जा रही हैं। गुड लॉर्ड। मेरा ताल्लुक पिंडी से है, रावलपिंडी से। फोटोग्राफी शुरू करने से पहले मेरी दिलचस्पी लिटरेचर में थी और मैं फ्रेंच लिटरेचर पढ़ रहा था। मैं मास्टर्स किया था फ्रेंच लिटरेचर में। उसके बाद पता नहीं क्यों, कहाँ से, आई हैव नो आइडिया, हुआ कि जी फोटोग्राफी करनी है। And one of the reasons was I was not the best student in the sciences. So well, photography arts है, चलो करते हैं जा करके। तो देखा, इधर उधर दुनिया भर में तलाश की, कहाँ पे मौका मिल सकता है, क्या हो सकता है, क्या बर्दाश्त किया जा सकता है फाइनेंशियली। इवेंचुअली अमेरिका पहुंच गया, कैलिफोर्निया में एक स्कूल होता था, ब्रुक्स इंस्टीट्यूट ऑफ फोटोग्राफिक आर्ट्स एंड साइंसेस। वो अब खत्म हो गया अनफॉर्चुनेटली। वहां पहुंचे तो वहां पे पढ़ाई शुरू की। पढ़ाई जो शुरू की तो सबसे पहला जो धक्का लगा कि ओ बेले, ये तो साइंस पढ़नी पड़ रही है, मैथ पढ़नी पड़ रही है, फिजिक्स पढ़नी पड़ रही है, केमिस्ट्री पढ़नी पड़ रही है, सारी चीजें, बिकॉज दिस इज 1979, so it's a very long time ago. Okay, but in any case, बर्दाश्त करा करके पढ़ लिया। 4 साल 5 साल झक मार लिए पढ़ाई में। और क्या पढ़ा, ये बड़ी अजीब सी चीज थी। फोटोग्राफी लोग कहते हैं कि भाई खाली एक तस्वीर से वास्ता है। अनफॉर्चुनेटली जो मैं पढ़ाई की उसका तस्वीर से बहुत कम वास्ता था। The area of photography I studied was scientific photography. That was my specialization. हाँ ठीक है, हमने पोर्ट्रेचर भी पढ़ी, कमर्शियल भी पढ़े, प्रोडक्ट फोटोग्राफी भी पढ़ी, इंडस्ट्रियल फोटोग्राफी भी एक्सप्लोर किया, कलर्स के बारे में सीखा, टेक्नोलॉजी के बारे में सीखा। लेकिन साइंटिफिक इसलिए पढ़ी क्योंकि आई वाज अ सेल्फ सपोर्टिंग स्टूडेंट। सो मेरे माँ बाप पैसे नहीं दे रहे थे मुझे कि बेटा तू पढ़ ले जाके। And being private institutions, there was no financial assistance available, simple as that. So फैसला ये किया था कि वो चीज़ पढ़ो जिसमें कि फीस वही हो लेकिन ज़्यादा सीख लोगे कम वक्त में। So this is how I arrived at this. और कर आकर के फिर तकरीबन 2 साल में वहीं काम किया। और उसके बाद फिर हुआ कि यार किधर गोरों के मुल्क में नौकरी कर रहे हो, अपने मुल्क चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो पाकिस्तान आ गए वापस।
अच्छा, पाकिस्तान आए तो I had no prior experience of any city other than Pindi and Lahore. अब market कहाँ थी? Karachi was the market at that time. This is 1985. And this was Ziaul Haq ka zamana tha, peak period of Zia. And politics were not the best, situations were not the best in Karachi, हालात बहुत खराब थे. But irrespective, तो जो मेरा तजर्बा हुआ था, मेरा एक अमेरिका का एक्सपीरियंस था. मैं बड़ा टाई बूट लगा करके पोर्टफोलियो उठा करके एड एजेंसी में इधर उधर चक्कर मारने शुरू किया, तो मालूम ये हुआ कि फोटोग्राफी वाज अ वेरी लुक डाउन अपॉन. कि फोटोग्राफर बन गया वो खानदान की नाक कटवा दी तुमने तो. Because personally I come from a family with professionals in there. तो ये तो गड़बड़ हो गई है. But in any case, पहला जो काम हुआ, मुझे एक नौकरी मिल गई एक एड एजेंसी में एज अ फोटोग्राफर कराची में. The agency was Ad Arts. थकी 3 महीने पूरे काम किया. Probably the best experience of my life for the rest of my days in Pakistan. कि हर वो चीज जो नहीं करनी चाहिए, जो नहीं होनी चाहिए, वहां होती थी. सो उससे मैंने सीखा, सच्ची बात है. और उसके बाद फिर 3 महीने के बाद मैंने कहा नहीं भाई, ये मेरे बस की बात नहीं है, अपना धंधा चालू करो. एंड दैट इज व्हेन आई वेंट फ्रीलांस. अच्छा, ये सब हो रहा था तो आई मीन आई डिडंट नो अ सोल इन कराची. आई वाज द फर्स्ट टाइम इन कराची कि भाई क्या होना क्या नहीं होना है. बट कहीं से इधर से उधर से लोगों से मुलाकातें करके, दरवाजे खड़खड़ा करके, इंटरफ्लो उसी वक्त शुरू हो रही थी. आई होप यू आर फेमिलियर विद इंटरफ्लो. इंटरफ्लो आप लोग जानते हैं इंटरफ्लो कम्युनिकेशंस व्हिच देन बिकेम Ogilvy and Mayfair. अच्छा, ठीक है. I didn't know. You should. I'm telling you, Interflow Communications came on around, और हमारा उनसे, myself and another friend Ramel, who was a videographer, we had both returned from the West at the same time. Somehow we connected with them, and it was a brand new agency, and they said कि भाई हमने फर्क चीजें करनी है. And that's where it started. And as a result of which, the two of us combined with the company Interflow. The gentleman involved with Interflow was Tahir Khan. Changes started to happen. We made a big difference there. वहां से शुरुआत हुई थी. And while this was happening, Indus Valley was coming up in Karachi. उसी वक्त शुरू हुआ था. So I got to know the people there. जो उनके founding members थे, like Shahid Abdullah, Arshad Abdullah, Noorjahan Bilgrami, and all those people. उनसे बातचीत शुरू हुई और हुआ कि भाई आर्ट स्कूल बन रहा है, आर्किटेक्चर है, ग्राफिक डिजाइन है, कम्युनिकेशन डिजाइन है, फोटोग्राफी भी होनी चाहिए. So that was an incredible opportunity for me, and they offered कि भाई इधर आकर के शुरू कर दो. So we created a photography department there, myself, just me, nobody else. वहां से शुरुआत की थी. This is now, I believe, 1987 maybe. Okay. So वहां से शुरुआत हुई थी, and then never looked back. Commercially, massive success. Changes started to come about because पाकिस्तान में उस वक्त जितनी भी फोटोग्राफी हो रही थी, the idea was कि जी बत्तियां लगा दो, रोशनी कर दो, तस्वीर खींच लो. इस चीज की कोई समझ नहीं थी कि भाई रोशनी तो होनी चाहिए, लेकिन कुछ रोशनी की कमी भी होनी चाहिए. You know, textures, light, shade, form, shape, contour, and all those wonderful things. वहां पे फर्क था जो मैंने काम शुरू किया था. And
that's where it started. तो क्या उस वक्त बहुत लोग फोटोग्राफी में आ रहे थे? कम थे, बहुत कम थे. It was not a reputable profession. So called जो बेचारे मार खा गए थे, जिनको और कोई इधर उधर कुछ नहीं कर पाए थे, और जी फोटोग्राफर बन जाओ. जैसे एक जमाने में पाकिस्तान में, आई डोंट नो अभी होता है कि नहीं होता है, होता था कि भाई ओहो आपने को बहुत अच्छा काम नहीं किया, चलो आप टीचर बन जाओ. And teachers are the most important people, but it was the people who did not succeed in life who became the teachers, which was sad. So this was the case. But over a period of time, things changed, you know. And one of the reasons I think, I would like to believe that I was one of the catalysts, just one of the catalysts, because फिर मेरे साथ साथ 2-3 लोग और शुरुआत हुई थी जिन लोगों की, जिनमें के टप्पू जवेरी was one, आरिफ महमूद was the other one. फिर इसके साथ साथ I mean, मेरा फूजी से बड़ा अच्छा रास्ता था, कोडैक से बहुत अच्छा रास्ता था, तो उन लोगों के थ्रू और बहुत लोगों से मुलाकातें होती थी. एंड आई वुड देन यू नो जस्ट अपने स्टूडियो में लोग आते थे मेरे पास, हाँ जी आ जाओ, क्या सीखना है सीख जाओ, जो भी करना है. It was free of charge, because one of the objectives that I had was knowledge is something that is not owned by anyone. Knowledge should be available to anyone and everyone at any given point in time. If I have some information that I can share with you, which will make your life better, it's not my right to hold it. पाकिस्तान में लोग बड़े insular होते हैं, insecure होते हैं कि नहीं जी नहीं, ये तो मेरी secret है, मैं कैसे बता दूं आपको. I'm not being critical of Pakistan, but please don't take it in the negative sense. That is the reality. So वहां से शुरुआत हुई थी. फिर उसके बाद इसी तरह से progressively I also ended up getting into a lot of fashion photography. Fashion gave me a tremendous amount of public exposure, because I was, I think, one of the first person who actually started to look at fashion with a different eye. And fashion was not being done for the sake of documenting a piece of fabric or a piece of clothing, but perhaps to communicate a lifestyle. You know, there is a difference. And then Arif was there, Tapu was there, and fortunately at the same time, support me, Nabila was there, Tariq Amin was there. These were people who were starting. So meri kismat thi that I happened to be, I think, in the right place at the right time. And I think it was true for all of us, for all of us. It just happened that the timing was right, the place was right, and it happened. Okay. और फिर करते कराते eventually हुआ कि चलो अब और क्या कर सकते हैं, तो there used to be a publication called Fashion Collection. I don't know if you guys have heard of it. This was the first glossy, slick fashion magazine ever to be produced in the country. ये शुरू किया था, again, these are two people who then we became very good friends, Alia Mia and Rahman Ahmed, out of Karachi once again. और उनके साथ किया, and it was doing extremely well. And I think 1 year later, I decided कि जी अब मेरी बारी है, अब मैंने भी को शुरू करना है. And we started a magazine, myself, in collaboration with another person, called Visage. Visage, I believe, still exists in an online world. But on departure from Pakistan, I left that. And it was given away to Batul, who was my editor, and she is now the publisher of it. तो basic कहानी ये है. तो अब आगे मैं और क्या बोल सकता हूँ, ये आप पूछें मुझसे. ये जो आपका साइंटिफिक फोटोग्राफी से फैशन तक जो एक बिल्कुल ही कॉन्ट्रास्ट में आपने यहाँ के काम किया, उससे कोई आपको मुश्किल आई? उससे आपको कोई, क्योंकि यहाँ पर तो उस तरह काम हो नहीं रहा था, बहुत कम लोग थे, कम फील्ड्स थी फोटोग्राफी में,
जिस तरह आपने कहा अभी लोग आ रहे थे, क्या आप उस वक्त फैशन करना चाह रहे थे या आप कमर्शियल करना चाह रहे थे, या आप यहाँ कमर्शियल तो करना चाह रहा था। देखें, नहीं, देखिए, अक्लमंदी का तकाजा ये है कि हकीकत पहचानो। पाकिस्तान की हकीकत ये थी कि देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ एनी एक्सप्लोरेटरी साइंटिफिक फोटोग्राफी व्हाटसोएवर, because we don't have the technology nor do we have the sector for it, because the area of interest that I was studying dealt with the defense industry. पाकिस्तान में कोई ऐसी रिसर्च नहीं हो रही थी, कोई कुछ नहीं हो रहा था. The advantage that I had transitioning was studying scientific photography. मेरा जो technical background था phenomenally strong with reference to technology as it was evolving. Okay, and as a result of that, I mean, I was probably one of the first people in the business, in the industry, who started using computers. I think मेरे पास पहला कंप्यूटर जिससे कि मैं काम शुरू किया था was 1986. 386 with जिसमें जनाब 4 मेगाबाइट की हार्ड ड्राइव स्पेस होती थी, कहते थे बड़ी तोप चलाती है. Wow. So I had the ability to adapt to it, and I grew with that. And as a result of which, despite the fact that now I am becoming an old fogey, I am still very, very current with technology, perhaps more so, and forgive me for saying this, more so than you guys are, in terms of the way technology has evolved, how it has developed, because I continue to participate within that framework. So, no, it was not difficult. If anything, it facilitated my life. जहां तक कि कमर्शियल काम से फैशन में जाने का ताल्लुक था, कमर्शियल में पैसे ज्यादा हैं. एंड ऑफ द स्टोरी. फैशन में पैसे नहीं है, बहुत कम है. लेकिन फैशन की अपनी एक जो कहते हैं ना ठड़क थी. You had exposure. You had publicity. Commercial काम आप करते हैं, you wouldn't even know what commercial work have I done that exists out there, because there is no point of reference. फैशन का जो आप करते हैं उसमें आपका नाम जाता है, क्रेडिट जाता है, और आपका ऑडियंस फर्क होता है. Fashion globally, when you do fashion, you get recognition into the public's eye. तो उससे मुझे ये फायदा हुआ था. जहां तक ट्रांजिशन का है, was it a conscious choice? Perhaps not. लेकिन वो ये हुआ कि यार अच्छा तुम ये करते हो, तुम ये कर सकते हो, हाँ कर देंगे. It's all about light, right? कर देंगे, ट्राई करते हैं, क्या जाती है. कोशिश की, थोड़ा सा अडेप्ट किया, थोड़ा सीखा. ऑब्वियसली शुरू में बड़ी फजूल किस्म की तस्वीरें भी खींची हैं, फिर उसके बाद वक्त के साथ साथ बेहतरी होती गई. And you got a better understanding and you started to meet people. अब किसी डिजाइनर से बात हुई तो उन्होंने बोला जी कि ये इस तरह से इस तरह से इस तरह से मैंने तो ये सोच के किया है, किसी मेकअप वाले से बात की तो उससे बोला कि भाई ये लुक फलाना ढमकाना, तो वो भी उनसे सीखा किस तरह से क्या होता है. And I was fortunate that I got to, जो कहते हैं ना, again, being in the right place at the right time. जहां तक फैशन का ताल्लुक है, who were the designers who were coming up, who were starting? माहीन खान, रिजवान बेग, लाहौर से वसीम, सोफीज कलेक्शन वाले, Generation, Saad, TJ's was there for a while, but TJ's was a very different market. I mean, Sana Safinaz, they were nobody at that time. So I got to know all of them, and we are still very good friends with each other. We know each other, we respect each other, we know who we are, जो दुनिया उनसे अब मिलती है इन तमाम लोगों से, भाई बड़ी होते बड़ी नहीं है, भाई टॉप नॉच लोग हैं. For me, they are still the same people, and I hope I am still the same for them. So the transition wasn't difficult. It was interesting, to say the least. तो आपका जो फ्रेंच लिटरेचर में इंटरेस्ट था, उसने आपकी फोटोग्राफी के काम को किस तरह से इन्फ्लुएंस किया, या जनरली लिटरेचर में अगर आपका कोई लिटरेचर क्या है मुझे ये बताएं. मेरा आपसे उल्टा सवाल है. What do you consider literature to be? Or let's say
Forget literature. What do you consider a piece of writing to be? It is an expression. It's an expression, yeah. Correct? And when you do read a book, what is the author trying to do? To Tell a create an story. environment, to paint a picture, to tell a story. What does a photograph do? It does the same. It doesn't really do the same thing because it's a single photograph. It's a moment in time, so it's a slice of that moment in time. There's a fundamental difference, but a photograph has the power to take that thinking away, and it paints the picture for you instantaneously. That is the fundamental difference. But principally, it's the same idea. तो जहां तक आप पूछ रही हैं कि literature से क्या वास्ता है, literature evoked a curiosity, the idea to paint a picture, to create an image, as opposed to with words, perhaps in the visual sense, with an interplay of light and shade. That's how it may have influenced. It's, I'll be honest, completely unconscious or subconscious. कोई इतनी सोच के नहीं की थी उस वक्त. हाँ, as I have grown older and I've been involved in the teaching world for a very, very, very long time, and I developed courses and curriculum, उसमें अब ये तमाम चीजें मिल के आ रही हैं. So that's where the difference has come about. अच्छा, मैं बहुत शौक से ये सवाल पूछती हूँ, या मुझे बहुत शौक है इस चीज़ के बारे में बात करने का, लेकिन ऑब्वियसली मेरा नॉलेज बहुत कम है और मेरी कोशिश होती है कि इस चीज़ के बारे में बात की जाए. फोटोग्राफी इन एजुकेशन, हमारे एजुकेशन सिस्टम में या हमारे जो आर्ट्स डिपार्टमेंट डेवलप हैं, वैसे तो पाकिस्तान में 2 या 3 आर्ट कॉलेजेस हैं. मैं बहुत जानना चाहूंगी कि आप हमें बताएं कि फोटोग्राफी को पढ़ना कितना इम्पोर्टेंट है. फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पोर्टेंट है भी या नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग फोटोग्राफी को पढ़ते नहीं हैं या फोटोग्राफ्स बहुत सारे फोटोग्राफर्स का काम नहीं देखते. उसमें थोड़ा सा ये भी है कि हम समझते हैं कि कमर्शियली अगर आपको रिकग्निशन मिल रही है, आपको काम मिल रहा है, तो उसकी ज़रूरत नहीं है, उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और लोगों का काम देखने की ज़रूरत नहीं है, उसके बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है. जो क्रिटिकल थिंकिंग का पॉइंट आपने कहा था, या सोशली पॉलिटिकली जो लेयर्स हैं हमारे उसमें, वो हम काम में कैसे दिखा सकते हैं, नहीं दिखा सकते, क्या वो सारी कन्वर्सेशन है. हमारे जो आर्ट कॉलेजेस हैं उनमें इस तरह से फोटोग्राफी को पढ़ाया नहीं जाता. तो क्या आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट है? अगर इम्पोर्टेंट है, कितना इम्पोर्टेंट है, क्या किया जा सकता है, क्यों करना चाहिए, और ये होगा भी या नहीं होगा? Okay. ये भी मैं जानना चाहूंगी. No, valid. It's an important question for multiple reasons. इंसान पढ़ाई क्यों करता है? मकसद क्या है पढ़ाई का? Knowledge, growth, information. जो कहते हैं ना दिमाग को खोलना. और पुरानी एक कहावत है, सफर वसीला ज़फर. I hope you understand what I'm saying. You haven't heard of it. Oh boy, oh boy, oh boy, oh boy, oh boy, oh. Safar wasila is zafar. Safar, travel. Travel. Wasila is the resource, the reason. Wasila is zafar. Zafar is knowledge, information, wealth. So when you travel, you become wiser. You gain knowledge. By the same token, when you study anything, it doesn't matter whether it is photography or I don't care what it is. When you read something, when you study something, it opens your mind to alternatives. Fair enough? Photography, interestingly, was not considered to be one of those things at one point in time because it was still a social taboo. लेकिन आज के ज़माने में, the visual has become remarkably important. Without the visual, there is nothing. And to give you a classic idea, and where it is being misused or abused in many ways, is social media.
सोशल मीडिया में आप फेसबुक या इंस्टाग्राम या टिकटॉक या इधर उधर जहां भी जाएंगे आप, लोगों ने अपनी अजीब अजीब पर्सनालिटीज बनाई हुई हैं। और अजीब से मतलब ये नहीं है कि वो कोई गलत है, मगर वो misrepresentations हैं, because people are living their own fantasies through this representation via the social media platform. So it's not the conversations, but it's the visual that is having the impact. So is it not relevant to better understand what impact photography has? I think it's absolutely imperative. You know, सियासत समझने के लिए आपको जरूरी नहीं है कि आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ें, लेकिन हिस्ट्री का मकसद क्या है? पुरानी चीजें गुजर चुकी हैं। You read history for one reason, so that you understand how things have developed and evolved. And if you are intelligent and smart, you will use that knowledge and information for the future development that you will be going through. How is photography any different? It is a very powerful medium. वेस्ट में तो लोग अब बहुत सीरियसली इस बात पे बात करते हैं, and it is being used in the more sort of contemporary institutions. The influence and impact of the visual on a society at large. So I think it is critically important that we understand the medium, number one, in its social and political context. But at the same time, to become good at it, you need to understand the technology that goes into it, the techniques that go into it. You know, बात वही होती है कि भाई आप मास्टर पेंटर एक दिन में नहीं बन जाते हैं। लोग 4-4, 5-5, 10-10 साल लगाते हैं फंडामेंटल सीखने में। फिर उसके बाद उनकी एक्सप्रेशन में और सोच में एक क्लैरिटी आती है। So, you know, it's a mix of the two things. You have to learn and understand and grasp what is going on in this world and read about it. I mean, बात वही है ना जी कि मैं आपको ला करके कैमरा दे देता हूँ, हाँ जी लो इस्तेमाल करो। अब आपने तस्वीर तो खींच ली, बटन दबा दिया ऑटो पे लगा करके। आपको इस बात की समझ नहीं है कि वाइट बैलेंस क्या होता है, आपको इस बात की समझ नहीं है कि वाइट बैलेंस की रेलेवेंस क्या है। What does it mean? Why is it important? These are details that need to be taught. But Go ahead. sorry मैं आपको काट रही हूँ, लेकिन you're absolutely right, लेकिन that is obviously about the technology and to understand how this works. लेकिन एक हिस्सा उसका ये भी है कि हम काम देखें या उसके बारे में बात करें या देखें कि दुनिया में फोटोग्राफी में क्या हो रहा है। मुझे इसलिए लगता है क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान में फोटोग्राफी की कोई डिग्री नहीं है। अगर आपको फोटोग्राफर बनना है, अगर आपने सोच लिया है कि आपने कोई इंस्टीट्यूट में जाके फोटोग्राफी का कोई कोर्स करना है, तो आप 6 महीने का या 3 महीने का एक शॉर्ट कोर्स करके फोटोग्राफर बन जाते हैं। लेकिन एक पाकिस्तानी जो 3 महीने का शॉर्ट कोर्स करके फोटोग्राफर बनता है और बाहर दुनिया में वो डार्क रूम्स में, चाहे वो डिजिटल फोटोग्राफी करता हो, वो डार्क रूम्स में भी वक्त लगाता है, वो प्रिंट भी देखता है, वो टेक्सचर भी समझता है, वो स्केल भी समझता है, वो साइज भी समझता है, उसने काम भी देखा हुआ है, उसने किताबें भी पढ़ी हुई हैं। वो सेम लेवल पे शायद नहीं आ सकते। तो एजुकेशन जिस तरह आपने बांग्लादेश की बात की, पाठशाला इंस्टीट्यूट की बात की, मैंने पहले भी किसी से मुकालमा सीरीज में सवाल पूछा था कि उन्होंने कैसे क्या उनका राउट एजुकेशन था, और somebody said yes. So obviously they brought people together, but then there is they're educating people about what they're studying. तो आप उसकी रेलेवेंस में पूछना चाहती हूँ कि क्या है पाकिस्तान में, आपको क्या लगता है कि क्या है, क्या नहीं है, क्या होनी चाहिए? पाकिस्तान में तो खैर अभी तक नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली कोई डिग्री नहीं है और कोई पाकिस्तान में होगा भी नहीं। पाकिस्तान में
अनकरीब फ्यूचर में बहुत मुश्किल नजर आती है. Why? You see, the question is not कि भाई हाँ ये नहीं होगा, बड़ी categorical statement दे दी है मैंने, लेकिन उसकी वजह समझनी चाहिए इंसान को. Again, when it comes down to, you know, looking at the past, historical references. If you look at the history of the country over the past 20 years, how has the country evolved? You tell me. You are living there. I'm not. I think it has not really evolved in that way. It's more like there's a there मुझे ये लगता है कि एक गैप था जो बढ़ता गया है of क्यों बढ़ा है? understanding. नहीं, hang on. गैप क्यों बढ़ा है आपके नजरिए में? I think because fundamentally, I think we're still there somewhere. We are not ready to evolve, or maybe we're not ready to educate, or you know, we're not ready to open up to. Look at the development of the country over a period of time. Because I mean, I'm much older than you guys are, so I have some probably benefit of my experience in my earlier, younger days. And while living in Pakistan and working as a photographer, पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला हुआ ये है कि as a society and as a country and as a nation, we have not been able to develop a self-identity of a Pakistani. We are still divided amongst कि जी ये पंजाब से है, ये सिंध से है, ये बलूचिस्तान से है, which is fine. There's nothing wrong with that because you have your ancestry and heritage. By the same token, दूसरा divide इसके, you know, इस किस्म के divide के अलावा socio-economic divide बहुत बड़ा है. Heritage inherited through colonialism has left a deep impression on our mind. कि जी गोरे दा काम है, जी गोरे दा काम है, गोरे ने बड़ा अच्छा काम कर दिया भाई. You can do just as well or better. You have to understand that. And as a result of which, पाकिस्तान की जो मेरे नजरिए में evolution है, उसमें insecurities पैदा हो गई हैं लोगों में. और लोगों में इतनी ज्यादा इनसिक्योरिटीज पैदा हो गई हैं कि वो मुस्तकिल अपने आप को ये कहते हैं कि जी आई एम द बेस्ट, तुम्हें कुछ नहीं आता. एंड एवरीबडी इज राइट व्हाइल नोबडी इज राइट. आप कॉन्वर्सेशन करती होंगी अपने दोस्तों के साथ या लोगों से जो आपके करीब में हैं. Everybody will have a very strong opinion and they will always believe themselves to be 100% correct. There is no room for acceptance of another opinion. When that happens, that simply means that you're closing your mind to alternatives. Education is not different because it eventually becomes a part of the society at large. जब आपकी society की evolutionary process में आपकी सोचने की सलाहियत घट गई है या रुक गई है, आपकी डेवलपमेंट बंद हो जाती है. जब वो बंद हो जाती है तो फिर जो आपने जो अपने कॉन्वर्सेशन का नाम रखा है मुकालमा, वो मुकालमा खत्म हो जाता है. Does that make sense? Yeah, absolutely. This is one of the reasons why this has never evolved. Number one. Number two, money plays a hugely important role. पाकिस्तान में idealism नहीं है, पैसा है. पैसे से idealism आता है लोगों के दिमागों में. Nobody is really willing to put in the hard work. Nobody is willing to put in the hard work. And as a result of which, guess what happens? As opposed to progressing, you flatline. Flatlining is not maintaining status quo. Flatlining means that everybody else is going up while you are at that level, means that you're going downwards. Fair enough? Yeah. This is how I feel. Okay? Yes, there are people who do make a difference. I will never deny you that. And those are the people who are the reason for that country to still have some phenomenal potential and spark that exists. और वो लोग हैं जो कि बेचारे बहुत कम हो गए. I mean,
I'm sorry to say I'm one of those who escaped the country. It's not that I wanted to leave that country at the peak of my career. I didn't really have much of a choice, personally speaking. And I said, I have an option, I will exercise this option. And I'm glad I did. Not because मैंने अपने राब्ते तोड़ दिए हैं सारे. No, I'm still very connected to Pakistan. And I feel for it. यार पैदाइश वहीं की है, मेरा वो है. It is what I am today is because of that. So yes, education is critically important. But इन तमाम चीजों का नतीजा ये है कि कोई शख्स ये सब पढ़ने की कोशिश नहीं करता है. ओ जी हो जाएगा, कैमरा ले लो, तस्वीरें खींच लेंगे, चल जाएगा, मैं जानता हूँ उसको, मैं इसको जानता हूँ, अंदर घुस जाएंगे और पैसे मिल जाएंगे. And that's about what is going on. Like it or not, that is the reality of it. Okay, I mean, आप commercial काम देखें, मैं देखता हूँ because I know people who are doing commercial work. 100% of the bloody work is so retouched that it stops being a photograph. उसमें वो रहता ही नहीं है कुछ, खत्म हो जाती है बात. फोटो जर्नलिज्म के कुछ लोग थे बेचारे, वो भी गायब हो गए हैं, गरीब हों, कोई जिंदगी हुई ना, रोजी भी कमानी होती है ना लोगों ने. जब रोजी नहीं कमा पा रहा है तो क्यों करेगा वो? राइट और रॉन्ग, बिकॉज देखें पेट भी भरना है ना, हकीकत है इंसानियत की. सो आई मीन, डज दैट आंसर योर क्वेश्चन इन सम एब्सोल्युटली. पर एजुकेशन क्योंकि मेरे भी दिल के थोड़े पास है, क्योंकि मुझे भी मैं इर्द गिर्द देखती हूँ कि ऐसा नहीं हो रहा. और एक आध दफ़ा मुझे कहीं पढ़ाने के लिए बुलाया था, और वो एक शॉर्ट कोर्स था फोटोग्राफी का, और वहां से मुझे ये थोड़ा सा एक झटका लगा था कि इन क्लासों में क्या हो रहा है. और हम आते हैं और हम यहाँ बस वो चक्कर मारते हैं और पेपर पे असाइनमेंट देते हैं और होता कुछ भी नहीं है. तो वहां से ऑब्वियसली तस्वीरघर मेरी अपनी प्रैक्टिस में या मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग में बहुत रोल प्ले करता है, क्योंकि मैंने फोटोग्राफर से हट के देखा है कि अच्छा फोटोग्राफी किस तरह से देखी जाती है. और मुझे कभी कभी लगता है कि फोटोग्राफी की डिग्री ना होना, या ना बताना कि ग्रांट्स किस तरह लिखी जाती हैं, या ये ना बताना कि अच्छा प्रोजेक्ट तो कर लिया, उसको कंपाइल कैसे करना है, या ये ना बताना कि एक सीरीज की है, वो सीरीज डेवलप कैसे हुई है, या कौन सी तस्वीर किस तस्वीर से बेहतर है. मुझे लगता है कि ये ना बताना इतना बड़ा गैप क्रिएट कर लेता है कि जब आपको लोग प्रोफेशनली जानते हैं मगर एज एन आर्टिस्ट आप शायद ग्रो नहीं कर पाते. तो इसलिए मैं बहुत शौक से इस चीज के बारे में बात करती हूँ. यू टॉक्ड अबाउट एस्केपिंग द कंट्री. इस चीज के बारे में कुछ बताएं कि आप ऑब्वियसली पाकिस्तान में आपने इतना काम किया, और फिर आप यहाँ आए, और यहाँ आकर किस तरह से, क्या आप फोटोग्राफी को आगे लेके चले या टीचिंग, क्योंकि टीचिंग में आपका इतना एक्सपीरियंस है. दोनों चीजें. पाकिस्तान से भाग गया था मैं, सच्ची बात बता रहा हूँ, बिकॉज जिस जमाने में मैं था पाकिस्तान में हालात अच्छे नहीं थे, सच्ची बात है. I left Pakistan in 97 में. So it's what, 23 years now? 23 years, nearly. और वजह ये थी छोड़ने की क्योंकि मेरे उस वक्त दो छोटे छोटे बच्चे थे जो अब बड़े जवान हो गए. I wanted to give them an opportunity to grow and develop beyond there. That was one of the reasons. But the driving force was a complete lack of security. एक नहीं, दो नहीं, बहुत बारी मेरे साथ हुआ है जी कि गाड़ी में बैठा जा रहा हूँ, मोटरसाइकिल आई, बंदूक निकाली, हाँ जी ला जाओ. घर के सामने मेरे, जहाँ पे मेरा स्टूडियो था कराची में, कमर्शियल स्पेस, उसके सामने मेरे लेबर कोर्ट्स होते थे. एक दिन निकला हूँ मैं और 4 लोग 2 मोटरसाइकिलों पे शॉटगन लेकर के 6 लोगों को मार के चले गए मेरे साथ. These were things that I didn't want for my children because it was having a major impact, number one.
Number two, corruption. Corruption was the second biggest factor. कि जी आपको काम दे रहे हैं, इसमें देखें जी हमारा इतना हिस्सा है. भी किस बात का हिस्सा है तुम्हारा यार? आई एम नॉट ओवर चार्जिंग. नहीं तो कोई बात नहीं, आप ओवर चार्ज कर लें, ओवर बिल कर लें. और ये मैं छोटे फ्रेमवर्क की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत बड़े लेवल की बात कर रहा हूँ. आई मीन I don't want to take names, and अगर आप एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं which will last you for about 4 months, and the project's total value, net value, is in the neighborhood of about 35 lakhs, and the year is 1989 and 1990. That's a crap load of money. And when somebody comes and says, yaar aisa karo, इसमें ऐसा करें जी कि आप 10% का इंक्रीमेंट करके इनवॉइस बना दें और हम आपको वो चेक दे देते हैं और आप उसी वक्त हमें कैश चेक डिफरेंस की वापस कर दें. सो यू गेट व्हाट यू मेकिंग, बट ये हमारा हिस्सा है. Fatma is surprised. Don't be surprised, my dear. You are naive then if you don't realize that this happens at a large scale, because मैं जब काम कर रहा था at the peak of what I was doing, I mean, the projects that I was doing were not small projects by any standards. They were massive, okay? So I was making a phenomenal amount of money. That was not the issue. और उसी की वजह से corruption जब हो जाती है ना, तो फिर मसाइल शुरू हो जाते हैं. And I refuse to do that. ये तो एक इंस्टीट्यूशनल लेवल पे है. एक इंडिविजुअल लेवल के ऊपर जब बिजली वाला आकर के आपके घर के बाहर की तार को डिस्कनेक्ट कर दे और कहे ओ सर जी तार टूट गई है आपकी, अच्छा जी तो ठीक कर दे यार. सर ऐसे तो नहीं हो सकता ना, कुछ मीठा तो होना चाहिए साथ में ना जी, आपका काम चालू हो जाएगा. बिकॉज द bastards knew what was going on here. So again, you have to pay them to get something that is your fundamental right. Because ये नहीं है कि जी मैं बिजली चोरी कर रहा हूँ, मैंने मीटर में पंगा किया हुआ है. None of the above. I am paying the actual bill. तो भाई जब इस लेवल पे चीजें आ जाए ना, तो फिर मसाइल शुरू हो जाते हैं. वो मुझे ज़हनी सुकून चाहिए था, सच्ची बात है. And I didn't want my children growing where all this became a natural evolutionary part of their lives. That's all. तो ये मेरी भागने की वजह है. I hope that, I mean, I'm not making an excuse, but that was one of the primary reasons. जहाँ तक यहाँ आने के बाद का ताल्लुक है, life was very difficult. I'll be very honest. For multiple reasons. Racism does exist, okay, in a very subtle manner. And I wasn't a young man anymore. I was in my 40s when I arrived here. जितनी major agencies थीं, they loved my work. लेकिन जब मैं creative director या art director से बात करता था, तो they were literally half my age. And it was very difficult for them, for multiple reasons, to acknowledge. Number one. Number two, बहुत कम people of color were in the business. It was a rarity, 99% gore. And they had been in the market for a while, so they knew people. I was new, so darwaze khatkhataane. So it was very, very challenging. So I never really got into the advertising directly. What I ended up doing was evolving. So I started knocking on doors with clients directly. And I started offering comprehensive services of not just photography, but design bhi kar denge, print bhi kara denge, falana bhi kar denge, timkana bhi kar denge. And that's where it came about.
But at the same time, because I had a good, I think, 6-7 years of experience of teaching in Karachi at Indus Valley, I had an interest in teaching. So I started looking around for teaching jobs as well. And I found one. And I'm still there 22 years later. And I continue to teach. And not only teach, but I develop their programs and I develop their courses and I create their research and reading materials for them. तो ये है मेरी जिंदगी की बेसिक एक मुख्तसर सी कहानी. तो आपको लगता है कि टीचिंग के बारे में पूछना चाहूंगी कि जब आपके पास स्टूडेंट्स आते हैं फोटोग्राफी पढ़ने, जाहिर है वो यंग होते हैं, वो इंटरेस्ट डेवलप कर रहे होते हैं, उनकी हॉबीज होती हैं, आपको लगता है कि फंडामेंटली अगर जब आप पाकिस्तान में पढ़ा रहे थे या अगर आप अब कभी विजिट करें, फंडामेंटली वहाँ के यंग लोगों में और यहाँ के यंग लोगों में कोई फर्क है, कोई स्टूडेंट्स में, जब स्टूडेंट्स क्लास में एंटर होते हैं, सवाल करना ना करना, इंटरेस्ट कुछ और होना, फोन पे लगे होना, इस तरह की चीजें, आपको लगता है कि फर्क हैं जो आगे जाके बदलती हैं? बहुत ज्यादा फर्क है. मेरा लास्ट तजर्बा था in 2010. I went back to Karachi for 6 months. Indus Valley wanted to develop a 1-year diploma in photography before anybody else had done it. So I was recruited to develop that. And I did. And I went and taught it. And फिर उसके बाद वो और लोगों को भी invoke किया था उसमें. The biggest difference is, I believe Pakistani students are far more creative in many, many ways. But they are short on their attention span and they shy away from hard work. That's the fundamental difference. यहाँ पे मेहनत करने पे राजी होते हैं and they are willing to go through the basic fundamentals and sort of, experiment and explore. पाकिस्तान में है जी मैं बस creative काम करना है. This is brilliant. But if you don't have the foundations, you cannot do creative work. Simple as that. Creativity is rampant in Pakistan, honestly, because, as a society, we have to be creative all the time to survive. And that creativity can take many forms. People in the visual arts world will adapt very, very comfortably to it. So they are very good at that. लेकिन जो pathway की जो मुश्किलें हैं उससे घबराते हैं. This is what I have seen. But if you motivate them, they are willing to work. Motivation चाहिए उनको. उनको देखना है कि यार ये इंसान ईमानदारी के साथ और सच्चे दिल से बता रहा है. And there is integrity involved here. Let's do it that way. And you need to set the example. And do you think teachers also play a very big part in the system? Absolutely, yes. जो teachers भी उसी system के हैं ना यार, वो भी वही करते हैं. There are very few good teachers. I'm sorry to say that. There are very, 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 very few good teachers. You see, being good at what you do doesn't make you a good teacher. Yeah. You need to be good at what you do, and you need to be very good at communicating and motivating and providing the right directions. हमारे मुल्क में, personally, when I was studying, there was no direction. बाजी पढ़ लो, ये किताब है, इसको इस तरह से पढ़ लो, ये रट्टा लगा लो, और इम्तिहान में ये लिख देना. There is no concept of exploration. There is no concept of research. And to give you an idea, 2010 में, 2010 में, Indus Valley में, once I was finishing up the diploma in photography, उनकी thesis presentation थी communication design की. So one of them had and I was one of the jury members amongst many others. तो उस student से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती भी हो गई eventually, and he became a photographer. He was inspired. He was a communication design student.
तो उसने अपनी थीसिस की थी टाइपोग्राफी पे. ओके, हो गया, सब कुछ हो गया. तो मैंने उससे सवाल एक पूछा ड्यूरिंग द ज्यूरी कि भाई, when you are using typography, do you consider a font or type or a collection of type in a paragraph as a visual graphical element? Don't think of typography as text that is to be read. Think of typography as an element of design. Oh, never thought about that. Nobody told me to look at it that way. So you know what I mean when I say that teachers make a difference. So I'm sorry, I'm not trying to run anyone down. No. I'm trying to be as honest as I can. नहीं, थैंक यू. सो पहले मैं काफी ये जो अगला मैं सवाल करने लगी हूँ, मैं बहुत कहती थी कि वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसा होता है, लेकिन मैंने हमारे इर्द गिर्द भी देखा है कि इंडिया में भी और बांग्लादेश में भी आर्काइविंग को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं, और पाकिस्तान आर्काइविंग में 0 है. क्यों? आर्काइविंग की अहमियत क्या है? पहले तो सवाल ये पूछें. देखिए, आर्काइविंग क्या है? हिस्ट्री है, तारीख है आपकी. और तारीख क्यों जरूरी है आपकी? क्योंकि आपको पता लगता है कि आपने क्या किया था और आगे क्या करना है. That is the whole point of history. I mean, archiving is a word that means कि भाई आप स्टोर कर रहे हैं पुरानी चीजें, but it's not just about storage. You are creating a point of reference within a timeline, which hopefully educates and makes you better understand the evolutionary process, right? So, I mean, this is why archiving is relevant. Pakistan mein kyun nahi ho rahi hai? Because Pakistan has never had a formal, kya kehna chahiye, formal sector per se in photography. I mean, no, don't get me wrong. Dawn in Karachi is doing archiving, a lot of archiving with their star agency. Arif is responsible for that. Yeah. Arif Mahmood is there, which is brilliant. The question is, who is going to use those archives, and who will have access to those archives? Archives should be available freely. I doubt that is going to happen. Okay, I mean, इसी तरह से जैसे ये भी मेहर ने जो fashionable history of Pakistan, and this is nothing but a document, an archive of the evolutionary process. Do we agree on that? Yeah. So somebody has to, I don't know, individually, people may have their archives, but that's about it. The question is there a central repository? No. Will it happen? I doubt very much. I'm being very honest about it, because there is no reason for it to happen. Nobody will gain anything from it. Not today. अगर आप आर्काइविंग शुरू करती हैं और आप मुझसे कहती हैं भाई अपने आर्काइव्स मुझे दे दो, I would like to create an image library. Brilliant. The benefit will be, I mean, you will have to obviously create a business model out of it so that, you know, one considers what the rationale is behind it. Why would I contribute my archives to you? Number one. Number two, probably आपके बच्चे उससे benefit करेंगे, or somebody else. You won't. So it's a long process. So the question is, are you willing to make that trade-off? There's one question from Meher. She said, please ask Asif, tell you about the Pepsi campaign that changed everything. Actually, no, Pepsi campaign didn't change everything. I disagree with that. The things that changed everything was the Bata campaign. That is what changed it. Bata ki campaign way before Pepsi. Shuru hui thi Bata by choice. Uska jingle, uska commercial, and I don't know if you guys can find it anywhere. And the press ads and the posters and the POS, phenomenally different. That is where it started.
Pepsi became more publicly known because of the names involved in it. और पेप्सी कैंपेन पे लोग बात करते हैं जी ओ जी इमरान खान, वकार यूनुस and वसीम अकरम, three big names, and Pakistan had just won the World Cup at that point. That's what made it happen. Pepsi campaign actually जब शुरुआत हुई थी तो it wasn't Imran and Wasim and Waqar. It was actually Vital Signs, Junaid Jamshed, Ruhail Hayat, and all those people. That is where the Pepsi campaign had started. But it took off and it changed everything. Because suddenly, for the first time, celebrity endorsement kicked into gear. Before that, it had never happened. And these were celebrities who were big at that point in time. Huge, massive. World Cup jeet ke aaye yaar. What more do you want? That's why it changed everything. So, it's not just that, but I think it's collectively a whole lot of things that evolved and changed the trends. But give credit where credit is due. Yeah. Bata ki campaign, Pepsi ki campaign, they were both run by one individual collectively. Interflow Communications, Tahir Khan and his wife Seema. They are the ones who are responsible for gathering the team that made it. So give them credit for it, because they were the reasons why. अगर वो नहीं करते, कभी नहीं होता ये सब कुछ. Life would have continued in its own pathway. So like you और पूछे. talked about celebrities and आपने बात की कि आप सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी के साथ काफी फेमिलियर हैं. तो अब जो सोशल मीडिया पे हम देखते हैं इन्फ्लुएंसर्स एंड सेलिब्रिटीज एंड कंटेंट, जो हम विजुअल देखते हैं वो उसको हम जाहिर है फोटो नहीं कहते या पिक्चर नहीं कहते, हम उसको कंटेंट कहते हैं अब की जबान में. आपको कैसे आप ये करते हैं डिफरेंशिएट कि अच्छा ये डेली कंटेंट है और ये एक अच्छी तस्वीर है? क्योंकि कंटेंट तो हर वक्त इतना ज्यादा हमारे पास आ रहा है, चाहे टीवी से, चाहे इंटरनेट से, हमारे फोन से, और बहुत सारे लोग सोशल मीडिया कुछ दिनों के लिए छोड़ देते हैं, क्लेंस करते हैं, डिटॉक्स करते हैं सोशल मीडिया, इस तरह की चीजें करते हैं. आपको लगता है कि आपको कभी कभी इस चीज की मुश्किल आती है या डिफरेंशिएट करना पड़ता है कि ये मेरे लिए एक अच्छी तस्वीर नहीं है और ये मेरे लिए एक अच्छी तस्वीर है? Absolutely, yes. इसके दो तरह से आप जवाब दे सकते हैं, दो तरह से सोच सकते हैं कम से कम. और जवाब देते हुए मैं आपसे दोनों से सवाल पूछूंगा. आप कपड़े खरीदने जाते हैं, क्यों आप एक तरह का कपड़ा खरीदती हैं और दूसरे तरह का नहीं? बिकॉज आपकी नजर को भाता है, आपने अपने जिस्म को देखा, उसके हिसाब से सोचा कि यार हाँ इसमें ये ठीक लगेगा मुझे. In exactly the same way, the clothing becomes secondary because you're looking at an image that you're going to be creating in a subconscious way. Content is something that creates that image and the messaging. As a photographer, I will also look at the influence of the image separately, without the content associated with it, independent of that. Does that make any sense to you? I mean, आप कपड़े खरीदने गई हैं, आपने देखा कि यार बड़ा जालिम आउटफिट है, ये तो सूट मैंने लेना ही लेना. But you don't buy it because you recognize this doesn't work for you. But you appreciate the aesthetics of that outfit. In exactly the same way, that is where I see the difference between content and the image that is associated in there. Does that make sense? Yeah. And देखिए मिसाल देने की बात है. And you could relate to the outfit. That is good communication. And that's why you're a great teacher. We can see that. अच्छा, बस मेरे पास कोई एक दो और सवाल हैं.
एक तो ये क्योंकि आपने काफी डिफरेंट तरह का काम किया, आपने इंडस्ट्रियल भी किया, आपने लैंडस्केप भी किया, आपने फैशन भी किया, आपने टीच भी किया। पर पाकिस्तान में जब आप काम कर रहे थे, आपको लग रहा था, या बाहर भी जब आपने काम किया, आपको लगता था कि एक आर्टिस्ट का एक स्टाइल होना चाहिए, जो बहुत लोग ये कहते हैं कि एक फोटोग्राफर या एक आर्टिस्ट का एक स्टाइल होना चाहिए, या तो इंडस्ट्री में सरवाइव करने के लिए, या जनरली एक आर्टिस्ट का काम जो है वो एक स्टाइल के साथ जुड़ा होना चाहिए, ताकि पता चल सके कि ये इसका काम है, या आपको स्टाइल? आई नो स्टाइल सबका होता है। सवाल ये है कि आप दो चीजों की बात कर रही हैं। आप एक जॉनर ऑफ फोटोग्राफी की बात कर रही हैं और एक स्टाइल की बात कर रही हैं। ये दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ चीजें हैं। okay? जहां तक कि वो जॉनर्स की बात है, फोटोग्राफी is a study of light and darkness. Without light, there is nothing. Without darkness, there is nothing. Because if you have pure light, it's nothing, zero information. And if you have pure dark, zero information. It's a combination of the two that makes things come alive. Do we agree on that? Yeah. If we agree on that fact, we also recognize that it doesn't matter which genre you're working with, as long as you have the sense to understand light and shade, depth, perspective, composition, texture, color, you're going to be fine. वो सारी टेक्निकल चीजें हो जाती हैं, राइट? जहां तक स्टाइल का ताल्लुक है, style will come in each genre by itself. So I think the question that you're trying to ask is, it's not about perhaps style per se as such generically, but perhaps style in a specific area of photography. मैं कहना ये चाह रही थी कि कॉन्शियसली डिसीजन लेना कि स्टाइल ऐसा होगा, क्योंकि बहुत दफा कमर्शियली जब लोग काम कर रहे होते हैं तो वो कॉन्शियसली एक डिसीजन ले लेते हैं कि मैं ऐसा ही स्टाइल करना चाहूंगा और फिर इसको अगले 20 साल तक ही करूंगा, क्योंकि इंडस्ट्री में सरवाइव करने का तरीका ये है कि आपका स्टाइल, आई अंडरस्टैंड दैट स्टाइल ऑटोमेटिकली आपके काम में आ जाता है अगर आप उसको एक स्टेप निकल के देखें, या बाहर से कोई आपका काम देखे, स्पेशली जिस तरह ज्यूरर्स होते हैं या टीचर्स होते हैं, वो एकदम से देख के कहते हैं कि ओ देयर इज समथिंग सिमिलर इन ऑल द वर्क्स, जो कि अनकॉन्शियसली हो रहा होता है या आपकी प्रैक्टिस में आ जाता है। लेकिन काफी लोग इस तरह करते हैं कि कमर्शियली इंडस्ट्री में सर्वाइव करने के लिए दे डेवलप अ सर्टेन स्टाइल बिकॉज दे थिंक दैट इज हाउ दे विल बी रिकग्नाइज्ड। Do you think that is important for an artist to do? No. I disagree with that in many, many different ways. I think style is very important. I will not deny you that. But anybody who continues to pursue the same style because that is the reason for the success, you are a follower, not a leader. Because what you're doing is you are following somebody else's trends. If you are going to be truly creative, you will create your own trademark. Then Fatma, you're right. It is like a trademark. So that's why I use the word trademark, because agar aap actually fangar hai, you should not be afraid to create your own pathway. Does that make any sense to you? I mean, Nusrat Fateh Ali, from a traditional cabal, he suddenly goes and pairs up with people like Peter Gabriel and so many Western musicians, and they create this phenomenal music, right? अगर हम इसी फिक्र में पड़े होते कि यार इसी ट्रेडिशनल स्टाइल में चलना है तो वो तो आता ही नहीं कभी भी, we would have been poorer for it. So yes, it is important to have your own vision. I would, as opposed to using the term style, I would rather say vision. कि ये मेरी नजर है, मैंने इसको इस तरह से प्रोजेक्ट करना है for this particular purpose, and that is where the success comes. That's how I look at it. Last we can question. Agree to disagree on it. No, I'm loving the conversation we're having.
There has been a couple of efforts, and again, I was part of it in 2010, which is the last time I visited Pakistan. There's a school, very old school in old Karachi called the Sindh Madrasa. वहाँ पे छोटे बच्चों को कैमरे दिए थे. And we started off. And if you ever wish, I mean, I have the images, you will be blown away. And this idea was for them not to become great photographers, but to help them become self-aware. Because बहुत बारी होता है कि we see things, but we don't really grasp the reality of those things. एक तस्वीर जो है वो एक साकित तस्वीर होती है, साकित चीज है. उसमें सारी चीजें नजर आती हैं, कचरा भी नजर आता है, खूबसूरती भी नजर आती है, और इंसान अपने आप को देखता है. That was phenomenal. I wish it could have continued, but unfortunately, these efforts, the moment you walk away, they die. Nobody is there to follow up because there is no financial return. That's the problem. You know, to give you an idea with regards to Lahore, there have been so many things published on the walled city in Lahore, for example. Tell me one publication or one story which deals with the residents of the inner city of Lahore. Zero. हाँ जी, वजीर खान मॉस्क पे बड़ी सी फकीर खाने पे लिख दिया हमने जी, बड़ी तोप चला दी है. Wonderful. Those are part of your cultural heritage. Yes, but the people living there are something we need to talk about, for God's sakes. You know, so that's a small, I mean, kuch na karo yaar. I mean, go to one of the gates of Lahore. You know, masjid ke saath, Lahori gate chale jao, Alamgir gate pe chale jao. Just tell stories of people who have been living there for centuries. Talk to them, photograph them, and don't photograph them for the sake of photographing them, but photograph them to tell the story of who they are, what the history is, what their environment is, how they have evolved. That's where the challenges are. Ye kaam nahi hua hai. That is the sad part, because isme paisa nahi hai. Unfortunately, लेकिन पैसा है इसमें भी, अगर आप थोड़ा सा सोचें. You can create publications out of it, which can then be sold. क्यों नहीं करते हैं? Lastly, please share some fun fact, fun story about you. Fun facts and fun stories. What do you mean by that? Life is fun all the time. कुछ भी मजेदार. Like what? I don't know. Any fun story on the set while shooting, anything. Yeah, okay. While shooting for the Pakistan Air Force, sitting in an F-16, passing out. Was it because of the height or the speed or No, what? भाई पहले उन्होंने हमें ट्रायल रन में डाला कि भाई तुम जरा देखें कि तुम बर्दाश्त कर सकते हो कि नहीं, the G forces and what not. बैठ गए, सब सेट हो गया, सब ठीक था. The first time I sat on a real, पहले तो उल्टियां शुरू हो गई. Didn't realize कि इतना नाश्ता करके जहाज में बैठ गया था मैं. I wasn't used to it, so I threw up, but didn't stop me from photographing. And then another time, simply passed out because of the G forces. And that was it. So, ये भी हुआ है. I don't know. Fun facts. Interesting stuff. I can lay claim to introducing some famous names. Please. Atika Odho. Ask her who was the one who photographed her the first time and made her come into the public eye. Long time back, actress Rima in Lahore. She was introduced through me. We had done a photo shoot with her for a calendar in Lahore for Amrock.
And that is when she was picked up by Evernew Studios and made into a star. और fun facts क्या हो सकते हैं यार? I mean, my life has been actually so much fun. I have done what I had wanted to do, which I have loved doing, which I continue to do, and probably continue to do till the day I die. That's a fun fact. Thank you, thank you, thank you, thank you. चलो, जाए. Thank you, Dafis, and we'll see you soon. All the best.